Hello, people. I am Jaby KOAY, joined by ACHARA KIRK. What's up? Thanks for coming back for SASTA Shark Tank Part 2 with Ashish Chanchlani. If you haven't seen Part 1 of our reaction, you should watch that before watching this one. Anyway, if you haven't already, please hit the subscribe button, bell icon, all notifications, and vote this up to let YouTube know you're enjoying what you're watching. While you're subscribing and upvoting, subscribe to Ashish Chanchlani Vines. There's a link in the description below. You can click on that link of the original video and upvote and subscribe to him from there. Help him reach his, I don't know if it's his goal, but help him reach 30 million subscribers. I was gonna say, help him reach his goal. I'm sure it's a goal of his to reach 30 million subscribers. I'm sure he wants that. Yeah, yes. For sure. And then he'll stop. just be like, I've had enough. Take the exit. Yeah. I'm just kidding. No, obviously, he'll go well beyond that. So, all right, here we go. Oh, he's playing opposite himself. Hello sharks. हाँ, ये बंदा ना शक्ल से जेन्युइन लग रहा है. बोल. आज मैं आप सबसे मांगने आया हूँ. सिर्फ 500 रुपए. 500 करोड़. अबे इसका कान फट गया है. नहीं फटेगा तो क्या फटेगा? 500 करोड़ मांग रहा है. 500 करोड़ नहीं 500. 100 नहीं 500 करोड़ मांग रहा है बहरे. अबे तू बहरा. अरे मैं 1 रुपया नहीं दे रहा. अबे यार उत्तपम इस बहरे को सुना. बता इसको क्या ऑफर है बोल. सपने आसमान छूने के होने चाहिए लेकिन पैर जो अरे यार दमशराज खेलते तो हिंदी इंग्लिश तो बता दिया करो. मुझे हवा क्या छोड़ रहे हो? His ears are completely shattered. अच्छा 500 रुपए मांग रहा है. अरे यार तू बकवास छोड़. मेरे को ये बता कितनी परसेंटेज की इक्विटी देगा हमें. मैं आपको देने वाला हूँ 49% इक्विटी. 49%. बॉस मैं हूँ. मैं तेरे को 1000 रुपया देने को तैयार हूँ. ठीक है मैं 2000. मैं 3000 देने को तैयार हूँ. You don't even know what it is. QR कोड में 2000 के ऊपर पैसे नहीं आते. अबे वो मेरे QR कोड को क्यों बीच में ला रहा है? मैं तेरा divorce.com का ना धंधा बंद करा दूंगा. समझा? उम्र का लिहाज करो इसलिए चुप बैठा हूँ मैं. अबे मैं तुझसे छोटा हूँ. अरे मूर्ख इंसान अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ मैं. ज्यादा बकवास मत कर. बबीता जी को उठा के तेरे पे फेंक दूंगा. अजीब बहन का लौड़ा है ये. मुझे मालूम है. इधर है. हाँ तो बहरा थोड़ी ना हो अंकल जी. देख भाई मैं ना तुझे फाइनल सबके ऑफर बता देता हूँ. मैंने तुझे 3000 रुपए ऑफर किए. उस बुढ़ऊ ने तुझे 2000 रुपए ऑफर किए. तुझे मैथ्स तो आती है ना, हिसाब तो आता है. अब तू बता तुझे किसका ऑफर लेना है? चमन सर आपका क्या ऑफर है? एक्चुअली मैं चमन सर के ऑफर में इंटरेस्टेड हूँ. बॉस मैं आउट हूँ. सर क्या हुआ? नहीं मैं आउट हूँ. तूने अभी क्या कहा कि मैं चमन सर के ऑफर में भी इंटरेस्टेड हूँ? नहीं इसने ये नहीं बोला. मैं ना तेरा अभी दोगलापन निकालता हूं. मैं बताता हूं तू कितना बड़ा दोगला है. तू इधर आया, ठीक है, तूने पिच किया तो बोल दो कि जो सबसे हैंडसम है, जो डैशिंग है, जो चार्मिंग है, जो पूरा मार्केट चला रहा है, उससे तुमको पैसे नहीं चाहिए. अबे तू किसी से पैसे मांगने आया है या तू पैसे मांगने आया है? मैं तुझे एक बात बताता हूं तूने क्या गलती करी है. एज अ एंटरप्रेन्योर यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल एंटरप्रेन्योर्स. आई एम सॉरी सर. थैंक यू सो मच चमन. अबे एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ. तेरी नहीं तू एंटरप्रेन्योर रहा तू. एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग भी आती है क्या? आती है. तो बता देंगे. अबे अभी बताना. ONTE. अबे वो ऊंटे आमरा नहीं एंटरप्रेन्योर है. समझा? अब तू छोड़ इसको. तू बोलता रहे. अच्छा लग रहा है. फील आ रही है. देख वो तुझे 3000 रुपए दे रहा है. मैं तुझे 5000 रुपए देता हूँ. अब तू ही देख ले. तेरे को लड़ाकू आदमी चाहिए या सपोर्टिव आदमी चाहिए? चेक रेडी है. बोल दूं आऊं वहां पे? चमन सर मैं आपके ऑफर के साथ जाना चाहूंगा. Yes. But like for what though? बॉस हिंदुस्तान में ना किसी को मैथ्स नहीं आती, सबको सिर्फ बायोलॉजी आती है. इसलिए हम लोग पॉपुलेशन में इतना आगे. क्या बात है. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. लेकिन आपने अपने बिजनेस के बारे में तो बताया ही नहीं. Talking about 5000 करोगे क्या? एक्चुअली सर हमें ना इस 5000 रुपए को 50 करोड़ में कन्वर्ट करना है. 50 करोड़? वो कैसे? वो तो तू बताएगा ना. तू 49% का मालिक है, मैं 51% का मालिक हूँ. तो कौन बड़ा पार्टनर हुआ? मैं तेरा आपसे बॉस हो गया. चल बता इस 5000 को 50 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करे? बता. मैं कैसे बताऊं? मुझे क्या मालूम. तो तू क्या इधर घंटे का शार्क है? जल्दी से शूटिंग खत्म करके 2 घंटे में ऑफिस पहुंच जा. आज ही मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, वरना कोड़े मार के शार्क से पॉम्पलेट मच्छी बना दूंगा. समझा? Oh my gosh, that's terrifying. That's like getting into a bad relationship. ओ भाई शार्क आ गया. असली शार्क आ गया. ओ भाई. और इन्वेस्ट कर बिना आइडिया सुने गांडू. Everyone was doing that. ये गोट के हेडफोन्स चल रहे. चमू. हाँ बताओ जी. चल रहे. चलो अच्छा है, अच्छे से गालियां दे पाएंगे.
Hello sharks. I'm here to asseverate my antecedents. एंटीसीडेंट्स वेंचो ये क्या आपका ये वर्ड मेरी डिक्शनरी से आउट है तो इसीलिए मैं भी आउट हूँ। पनीर भाई इसकी दोगलापंथी निकालो, बड़े बड़े वर्ड फेंक के मार रहा है हमें। देखो बॉस, मैं क्या कहता हूँ ना, थोड़ी सीधी और सरल भाषा यूज करो। यहाँ पे ना कुछ गवार लोग बैठे, ये गवार लोग आ जाते हैं बिना पढ़े लिखे सेट पे और बोलते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर है। ओए, उसने गवार बोला तो कैमरा मेरे पे क्यों डाल रहा है? जूता फेंक के मारूंगा गांडू। वापस कर कैमरा, उधर कर। Sharks, मैं आपसे मांगने आया हूँ 30,000 रुपए एट एन इक्विटी ऑफ 10% और कंपनी का वैल्यूएशन है 1,000 करोड़ रुपीस। भाई तू कौन से जीनी की गांड घस रहा है जो 30,000 में 1,000 करोड़ की वैल्यूएशन देगा? भाई ये सस्ती डीलों से दूर रहो, मैं बता रहा हूँ। ये पिछले वाली की तरह चूतिया काट रहा है। वो साला अभी मेरे को मैसेज करता है, बोलता है ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, 49% का मालिक है तू। ऑफिस आने से कोई तरीका होता है? आई एम आउट। भाई मैं तेरे को 60,000 रुपया देने को तैयार हूँ, पहले तू बता तेरा बिजनेस क्या है? नहीं, मुझे सिर्फ 30,000 चाहिए और वो भी मैं 5,000 करके 6 फेजेस में लूंगा। उससे मेरे कंपनी का वैल्यूएशन 1,000 करोड़ तो हो ही जाएगा यार। अबे तू है कौन? आईपीएल में सट्टा वट्टा करता है क्या? मित्तल ग्रुप का नाम सुना है? अनुपम मित्तल, अरे वो तो मेरा इनडायरेक्ट पार्टनर है। अबे तू कैसे जानता है उसको? तेरी औकात है क्या? अरे उसका शादी.com मेरा divorce.com। वो शादी कराएगा तो ही तो मैं डिवोर्स करवा पाऊंगा ना। बिना शादी का डिवोर्स कभी सुना है? चूतिए। अरे वो नहीं, मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके मालिक संजय मित्तल को जानते हो? He's playing with his sleeves. Yeah. उन्हीं का बेटा हूं मैं, श्याम मित्तल। अरे श्याम बाबा, आप तो कितने बड़े हो गए हो। बचपन में देखा तो छोटे हुआ करते थे। बबीता जी, इनके जो पिताजी है ना संजय मित्तल, अरे माई बाप है, हमारे गुरु है। जब ये जेब से रुमाल निकालते ना, कंपनियां छुट्टों की तरह गिर जाती है। मेरी Then why is he पहली कंपनी में here? इनका इन्वेस्टमेंट था। पर श्याम बाबा, आप इधर शार्क टैंक में क्या कर रहे हो? और आपको 30,000 रुपए क्यों चाहिए? 5 स्टार होटल से चाय वाय मंगानी है तो मंगा के देते ना बाबा। अबे वो संजू रोज दिमाग चबाता है यार। कौन संजू? अरे संजय मित्तल, मेरा बाप। रोज सुबह उठ के ताने मारता है मेरे को, तू बेरोजगार है, हरामी है, नालायक है, नल्ला है, तोता है। वो मेरे को क्या बोलता है कि अगर तूने हर महीने 5,000 कमाए ना खुद की दम पे, तो कंपनी सारी मेरी नाम कर देगा। तो मैंने भी सोच लिया ना, हर महीने 5,000 करके 6 महीने 30,000 उसको दे दूं। नहीं, 30,000 उसके मुंह पे मारूंगा और 7वें महीने कंपनी किसके नाम? मेरे नाम। कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ? 1,000 करोड़ और उसका 10% इक्विटी 100 करोड़। वो तुम भिखारियों में बांट दूंगा। अरे तो श्याम बाबा एक काम कर लो ना, 5,000 क्यों, आप 30,000 ले लो, मुझसे ज्यादा दिखा दो शेयर। 5,000 के ऊपर 1 रुपया देने का नहीं मेरे को उसको। PS5 सेकंड हैंड दिलाता है वो। श्याम बाबा, मैं क्या बोलता हूँ? आई एम इन। आई एम आउट। पहले तेरे को इस डील से आउट करूंगा, फिर तेरे को तेरी कंपनी से आउट करूंगा, फिर तेरी सारी बकरियां खरीद के ना तेरी गोट कंपनी हड़प लूंगा, फिर जिंदगी भर तू मैं करता फिरेगा। श्याम बाबा, मैं अरे अभी नहीं, 6 महीने बाद। श्याम बाबा, मैं क्या बोलता हूँ, मैं और उत्तपम जी साथ में आ जाते, प्लीज हमें इक्विटी दे दो। अरे इवन आई एम इन। What? क्यों देख रहे हो जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो? ठीक है श्याम बाबा, मैं उत्तपम और बबीता जी तीनों साथ में आपको पैसे दे देंगे। प्लीज हमें इक्विटी दे दो, आपस में बांट लेंगे। प्लीज ये डील करते ना प्लीज। हाँ चलेगा। बताओ श्याम बाबा, किसके नाम पे चेक बनाना है? अबे पागल है क्या? लाइन में कौन खड़ा रहेगा? सीधा बैंक ट्रांसफर कर मेरे को। अब और 500 रुपए एक्स्ट्रा करना, वो सिगरेट खरीदने का मेरे को। संजू साला बेल्ट से मारता है। ठीक है बाबा, भिजवा दूंगा। क्या बात है उत्तपम जी, क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। That was a pretty good deal. को जिंदगी की पहली डील है। Why? Because he got himself a bad deal. I know. She's always smiling the Yeah. same way. अरे थैंक गॉड बॉस, आप आ गए। मेरा ना इनके साथ सर फट रहा है, मेरे लिए तो चाय लेके आओ। मेरे लिए गर्मा गर्म आइसक्रीम। बबीता जी, आप कुछ लेंगी चाय वाय? आई एम आउट। अरे मैं आपको इक्विटी नहीं ऑफर कर रहा हूँ, चाय ऑफर कर रहा हूँ। कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। भाई यार तू चाय ला। अरे शख्स, मैं कंटेस्टेंट है। कंटेस्टेंट? भाई तू पहले ही बता दे, तू अंबानी का बेटा तो नहीं है ना? तो लोगों की बकरियां बिक गई है। अरे नहीं, मैं तो येल यूनिवर्सिटी का प्यून है। येल यूनिवर्सिटी? वो अमेरिका वाली? हाँ वही, जो अमेरिका से 18,000 किलोमीटर दूर इधर सानपाड़ा में है। अबे सानपाड़ा में कौन सा येल है? यशवंतराव अमृतलाल लखनभाई इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज का नाम ही पढ़ाते होंगे। बॉस तू शार्क टैंक पे क्या कर रहा है? मैं आज आपसे मांगने आया हूँ 30 लाख रुपए
और बदले में आपको दूंगा 8% इक्विटी अपने बिजनेस का। अबे तू किस चीज की इक्विटी देगा? समोसों की? देखो सपने जो है आसमान छूने के होने चाहिए, पर गांड जो है वो जमीन पे कसती है। ज्यादा घसोगे तो चिंगारी भी निकलती है। ओए मैं पहले ही बता दूं, मैं आउट नहीं हूँ। पहले मैं पूरी पिच सुनूंगा, फिर ही डिसाइड करूंगा। तू बता आगे। अभी मैं आपको मेरा बिजनेस समझाता है। मेरे कॉलेज में 70% बच्चे लाए हरामी और 40% बच्चों का प्रिंसिपल खुद आईडी जब्त करता है। उसको छुड़ाने का फाइन 200 रुपया, मैं 50 में छुड़ाता है। 0% इन्वेस्टमेंट, 100% प्रॉफिट। वाओ। अभी मैं आपको दूसरे धंधे के बारे में बताता है। उसमें मेरा हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम करके 30,000 रुपया खर्चा हो जाता है। बॉस हेयर मेकअप थिएटर करते हो? अरे नहीं ना सर, वो कॉलेज में पेरेंट टीचर मीटिंग होता है ना, उसमें बच्चे लोग मेरे को ही कभी चाचा, कभी दादा, कभी मामा बना के लेके जाता है। और वो तो कुछ भी नहीं, कभी कभी तो माँ भी बनना पड़ता है। उसमें मेकअप का बहुत खर्चा हो जाता है। वाओ। और मेरा मेन धंधा तो एग्जाम टाइम में शुरू होता है। अरे क्या टर्नओवर होता है उसमें। कैसे? अरे मैं पेपर लीक कराता है 1001 कॉपी का, लेकिन शाक मैं बहुत ईमानदारी से चीटिंग करता है। अरे जो पेपर लीक करता है एग्जाम में वही चाहता है। एक दिन तो मैंने गलती से इंग्लिश पेपर के दिन मराठी पेपर लीक किया। आई शपथ, इंग्लिश पेपर में मराठी में क्वेश्चन आया, शेक्सपियरच्या वडिलांचं नाव काय? लेकिन साहब मैं दिल का बहुत अच्छा है। अगर अमीर बच्चे लोग का जेब काटता है तो गरीब बच्चे लोग को फ्री में पेपर भी बांटता है। वाह क्या बात है। लेकिन एग्जाम के बाद Oh. हलवा है क्या? लेकिन शख्स हमारे धंधे में बहुत रिस्क है रे बाबा। वो दिन वो हलकट प्रिंसिपल मेरे को पकड़ लिया और सस्पेंड कर दिया। इसीलिए आज मैं इधर आया आपसे 30 लाख रुपए लेने के लिए। अबे 30 लाख क्यों चाहिए? प्रिंसिपल की सुपारी उपारी देनी है क्या? अरे नहीं ना साहब, वो प्रिंसिपल का पोजीशन 30 लाख रुपए में बिक रहा है, तो मैं वो खरीद के खुद ही प्रिंसिपल बन जाऊंगा और वो हलकट प्रिंसिपल को मैं प्यून रखूंगा। लेकिन इससे तो तेरे पर्सनल कर्जे सॉल्व होंगे ना, इससे धंधा कैसे होगा ये बता। अरे सोचो, अगर मैच प्रिंसिपल बन गया तो अपना धंधा तो 10 गुना बढ़ जाएगा ना। मैं बच्चों लोग का आईडी जब्त नहीं करेगा, सीधा 50 रुपए लेगा। मैं पेरेंट्स लोग को बुलाएगा ही नहीं, सीधा 50,000 रुपए लेगा। वेरी इंस्पायरिंग। मैं कॉलेज के हर चीज को धंधा बना देगा। 500 रुपए दो असाइनमेंट माफ, 1000 रुपए दो प्रॅक्टिकल माफ, 2000 रुपये दो लेक्चर माफ आणि 5000 मध्ये अटेंडेंस माफ। ये बंदा बहुत आगे जाएगा। अरे ये तो दिन का कमाई है, रात का सोचो कितना होएगा। अबे कॉलेज तो शाम को बंद हो जाते हैं, रात को क्या करेगा? अरे रात को मैं कॉलेज भाड़े पे चढ़ाएगा, केमिस्ट्री लैब में पटाखे बनवाएगा, बायोलॉजी लैब में हॉस्पिटल चलाएगा, एवी रूम को मल्टीप्लेक्स बनाएगा, कैफेटेरिया में होटल चलाएगा और क्रिकेट ग्राउंड तो अपना खाली है ना, तो उधर आईपीएल जमाएगा। Wow. क्या बोलते हैं शख्स? भाई ये बंदा कितना वर्सेटाइल है, इसे बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर। अब जाके शो में कंटेस्टेंट आए। शर्म आ रहा है शख्स क्या? थैंक यू। आप तो मेरा मास्टर प्लान सुने ही नहीं अभी तक। मैं एग्जाम के टाइम में बच्चे लोग को चीटिंग का 4 सब्सक्रिप्शन देगा। ओए कमाल हो गया। ओए पहला सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपए का, इसमें बच्चे लोग को एग्जाम में चिट सप्लाई करेगा। एक्सीलेंट। दूसरा सब्सक्रिप्शन 5 लाख रुपए का, इसमें बच्चे लोग को एग्जाम में डाइजेस्ट ही सप्लाई करेगा। मल्टी मिलियन बिजनेस। तीसरा सब्सक्रिप्शन 10 लाख रुपए का, इसमें बच्चे लोग को डायरेक्ट टीचर ही सप्लाई करेंगे एग्जाम लिखने के लिए। इसे कहते हैं ना नए इंडिया का भारत। और फाइनल सब्सक्रिप्शन 50 लाख रुपए का। 50 लाख? भाई इसमें क्या होगा? उसमें क्या? उसमें क्वेश्चन पेपर में आंसर भी छप के आएगा, आपको खाली नाम लिखने का I feel like this has to be a commentary on the Yeah. school system at large. Yeah, that's kind of what I'm thinking. I'm like, oh, is this making fun of how going to college has become a business now? I'm imagining huge multi-million-dollar businesses with giving kids the answers that they need so that there's so much pressure. Because I've listened to a lot of you guys talk about how you study, and I'm like, that sounds wildly unhealthy to just be reading books for 10, 12 hours straight. Like, Right, and you're not really learning anything. All you're learning is how to pass the exam, and you're not retaining any of that information past the exam date, probably. Your brain needs rest. Yeah. It just does. And to endow this much responsibility and pressure onto kids and stress
to the point where they feel like they can't take a breather and they can't just relax for a moment to recoup. You know, the fact that the system is the way it is, where it's like you have this window to do this, that's it. Yeah. You're fucked otherwise. Education is huge business. And so, yeah, I do feel like they're kind of making commentary on that. I mean, that's also the case over here, not in terms of like the cheating and whatnot, but a lot of kids come out of college in massive debt. Yeah. And it's like you're going to be working for a long, long, long time to pay off hundreds of thousands of dollars worth of school debt. Yeah. Which is just insane to think about. Like, you go to school to get like really educated so you can have a prosperous life, but you're spending like half of your life paying off the debt to get educated. And the thing about it is that's even scarier is a lot of people are going into school studying professions that are going to be outdated at a certain point. Like, everyone's going to be replaced by robots. Like, truck drivers are going to be replaced by robots at a certain point. Sure. Very soon. Even our job is going to go to computers at a certain point. There are Instagram personalities out there that are completely digital. Like, it's not people. Yeah. Except for maybe the voice, but even that you can replicate at a certain point. That's what Black Mirror was talking about. At a certain point, everything will be automated. A lot of the time, the university experience isn't just the studying, it's also everything else, like the extracurriculars, the friends you make, the connections you make. Then join a cricket club. You don't need to get yourself in a massive amount of debt to make some friends. Sure. What makes me scared for the next generation is how many jobs are not going to be there. Sure. So, like, what's the solution? I that's hear the you thing. just like giving, complaints, but like, what? I don't know. Well, the thing about it is the solution. There's no practical solution right now. It just seems really bleak. The only solution that seemed to make sense to me, and I know this is going to sound absurd to some of you guys, the only solution that made sense to me was what Andrew Yang was proposing, which was the universal income, whatever it's called. I forgot what the UBI, Universal Basic Income. Yeah, and so like that was the only thing that made sense to me, and it's like eventually that is going to become a thing. Just because Andrew Yang didn't get voted president doesn't mean that's not going to become a thing. That is going to become a thing. They're already testing it. Like, sure. That has to happen because there's such a huge disparity between the upper and lower, or upper and middle class. There's such a huge disparity. It's like this upper class is not going to be able to sustain itself if it doesn't have customers that can pay for their shit. And so the only way to have that continue is if you have UBI. That's going to get proposed at some point. I just don't like the school system as it is, and I haven't liked it since I was a kid. I've always thought that there was something broken about it. What I'm ultimately trying to get back to with regards to what was brought up here is that the system is broken and needs some massive reform, and all we're doing is continuing to put band-aids on it. Right. Meanwhile, kids are suffering with massive depression and stress, and these people are coming in an effort to relieve it by going, here, just pay me. There's the answer. And they're just making money off of that. They're making money, but but the system is creating bad students because these are people who are becoming who knows what professions, ultimately competing in the workforce, right? And there's fewer jobs available. Yeah. And they're educated off of cheated scores. That's a messed up system. It is a messed up and this system, this is not limited to India, by the way. This is just like globally, we've got a major problem here. There's just not enough jobs available. Yeah, it sucks. And so there are things that could help benefit society and create jobs, but for some reason we're not putting any energy towards that. For instance, and this is probably ambitious, and someone in the comments will tell me how stupid this is, but we had something called solar panel roads. You build out these roads, right, that are made of solar panels. And so what that does is it absorbs energy because it's a solar panel, and it powers on lights and everything like that, and reduces the cost of energy for everybody, right? And if you're living in a snowy terrain, the heated roads can move the snow to the side so that you have less car crashes and stuff like that. Those roads, that infrastructure would take years to complete. There's jobs there. And then maintaining it, there's jobs there. And so you have people who are constantly gainfully employed managing that aspect that is actually helping society. But for some reason, we're not investing in that. For some reason, it's just not important. I feel like this is speaking truths, It's just like, that's a big problem. Again, I feel so bad for the kids because like you're in this problem. Like, what can you do? Like, honestly, like what can you do? And then you have these politicians. Earlier, we did a video on the Abhishek Bachchan video. And you're like, well, I assume that, these guys get educated. And I'm like, I don't. And then a bunch of people commented going, it's well known that these guys are not. Well, I mean, I was kind of talking more about like a lot Western? of politicians in the West. I feel like if you're in America, most of the people there are probably educated. Educated or not, you got the same problems, just so you know. But I feel like it's potentially even worse when you have someone who's not educated going into this high profile position. Like, my automatic assumption is you're probably trying to line your pockets. You're not really caring about the people. I just derailed this complete. Sorry.
Shit. DID नहीं चल रहा है लेकिन मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूंगा। तू है असली एंटरप्रेन्योर। क्या बोलते शार्क्स? कौन कौन इन है? हम ना चारों शार्क्स इन आना चाहेंगे। भाई हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। क्या बोलता है, डील डन करे? अरे डन 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 नक्की। या इकडे माझे पैसा ना या। Terrible. देख भाई, चारों शार्क इन है। तूने इस धंधे का फ्यूचर सोचा है क्या होगा? अरे सर, आप लोग अगले सीजन मेरे को सब लोग 1-1 करोड़ रुपया दो। मैं बोर्ड के साथ में ऐसा सेटिंग बैठाएगा कि इधर बच्चे ने एडमिशन फॉर्म भरा नहीं कि उधर डिग्री हाथ में। Wow. कॉलेज का क्या करने का? बेच डालेंगे, शॉपिंग मॉल खोलेंगे। दे। अरे ताली ना रे, चेक दे चश्मीश, चेक दे शार्क टैंक। अगर आपने ये बिजनेस का चस्का जज्बा और मास्टर प्लान। तो आई एम आउट। तो प्लीज लॉग इन करें इस वेबसाइट पे और अप्लाई करें सीजन 2 के लिए। हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? अरे अभी चलो, नहीं तो असली शार्क्स आ जाएंगे, ठीक है? चलो लेट्स गो आउटसाइड। वाओ, दैट्स माय फेवरेट प्लेस। हेलो सस्ता शार्क टैंक। बैंक के लोड़ो, कितनी बार बोला है मेरा चेक मत दिखाया करो। टीवी में किसी ने साइन कॉपी कर ली। माँ का भूत तुम लोग की बेच। मेरा बैंक अकाउंट हैक हो गया, तुम्हारी माँ की चुप। Wow. भाई वीडियो को ना लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। शेयर तो मेरे 400 कंपनी। मैंने तेरे से पूछा तेरे से। भाई तेरा डायलॉग बोल। और सब्सक्राइब भी करी दो। कभी सीधे मुंह मत बोलना। और हाँ सुनो, विंजो करके गेमिंग ऐप है, उसे डाउनलोड करो। You notice Ashish like completely changed his voice for He this? did, yeah. It must be similar to the guy that he's parodying. I'm impressed. Yeah, really good. I'm impressed. Yeah. Anyway, I think we gave a strong commentary about this. We totally went off on one on Well, that I last did anyway. one. Sorry about that. Yeah, no, but I think it's an important thing, and I think that's kind of the message that they were, slipping in there like a little Trojan horse. I think this is the least hammy that Ashish Chanchlani has ever been in delivering his message. Yeah. Because he's done this kind of thing before, but it's more like on the nose and emotional, like where he's being kind of dramatic. Whereas this was more indirect. It's more satire. Yeah, you know? It was really good. Really good. Yeah, very, very well done. And I enjoyed all of the characters, like all of the actors on this were really, really good. It even production value wise, I haven't actually seen the set. I don't know how close it is to India's Shark Tank, but it legitimately looked like a proper film set, Yeah. I thought they did a really great job there with like the set design and all of that. This is obviously a joke set, right? But it looks legit. It does look legit. I mean, you can kind of tell from the bottom that it's got this sort of janky effect to it, and no stupid in the background. It says no stupid people, warning, genius at work, smile, something loves you. Yeah. These are joke signs. Like, I'm sure you wouldn't find any of this, but the lighting and the arrangement feels legit. And so what we have here is a link where there is a wheel, there's a way, Shark Tank India. So I'm not gonna play this. Get the chairs. I mean, it does look quite similar. It does look very similar, doesn't it? Wow, they even copied the whatchamacallit, the little YouTube won't let me freeze on the thing I want to. Like the text. Yeah. And the music as well. It's just annoying because like YouTube. Oh look, that's got to be the character that he's parodying. Yeah, there she is, the real one. Even her dress is similar. Yeah, what a thing to be called. Sharks? Sharks, yeah. Well, you know why, right? You don't? Go ahead, pray tell. Well, at least in my mind, the understanding is like, they're sharks because, it's like when you're swimming with sharks. Yeah. They're kind of the type of people that will eat you up alive, but they succeed in life. Yeah, but I don't want to be called that, but I guess it's, I don't know. Anyway. It's like, will you survive the Shark Tank? Oh my god, even the suit is the same. The set is far more elaborate than the mock set, but the similarities are uncanny. I mean, like, you can see exactly what they made fun of at a glance. If you've watched Shark Tank at all, and then you see Ashish Chanchlani's faux set, like, it looks exactly the same. That's crazy. Yeah. Like, it just looks like a more low-rent version of the same thing. Yeah, well, it's supposed to be because it's Right. the SASTA Shark Tank, right? It's the cheap Shark Tank.
She's just writing stuff down. I guess she's always doing that. Just doodling, you know, just drawing pictures. Yeah. Yeah. But anyway, That was a lot of fun. I'm glad he's calling that out. I'm glad he's calling out the broken system. I don't know how much it's gonna do. Like, I don't know how effective that's going to be. It's like a documentary. It's mostly preaching to the choir. It's like, yeah, we know. But now all we can do is laugh at it, I guess. That's the only thing we feel empowered to do is laugh at this absurdity. Mm-hmm. What else can you do other than become a politician and get And like, overhaul the system. But even if you tried to do that, like, how far do you think you get? Yeah, You know? it's a long road for sure. Yeah. Not to make this helpless or anything like that. I mean, I guess if any of you guys watching, if any of you end up going down a path that leads you into politics, all I ask is that you stick to your guns, that whatever is driving you to do that now, Yeah. you stick to that. Yeah. Remember your reason why you started doing it in the Because first place. so many people, it seems like globally, they go into politics and they end up just taking advantage of the system and lining their pockets. All I ask is that if you do that, please, stick to the mission and never forget your mission. That's the most important thing. Like, if you are trying to be the change that you want to see in the world, then be the change you want to see in the world and don't follow the pattern that has been, which is these political leaders that end up tricking everybody with their magical, charismatic words, and all they're doing is fulfilling their own benefit, Sure. Yeah. their own bank accounts. Mm-hmm. That's the only thing. Truth be told, I did think about going into politics myself at a certain point. I'm like, could I make a change? Like, cause you get tired of seeing what you see. You're like, could I do something about this? I think I just get afraid of dealing with what Obama dealt with, which is like everything you try to do, you got one hand tied behind your back as they basically limit you down to like 1% of the things you're trying to do. Yeah. And that level of frustration, I don't know if I could deal with that. When you're trying to improve the world and you're trying to make it a better place, and like they just keep, with the dumbest logic possible, they keep stopping you from making good change. Yeah. And yeah, anyway. Hopefully you guys had fun. Clearly this video sparked something in you because you're very passionate. I can ramble about anything, but yeah. You guys, thanks so much for hanging out with us. I'm Jaby KOAY. This is ACHARA KIRK. Peace out.